and we get. So आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है. It is about my experience when I started learning this language, how it went for me. So I'll be telling you all the personal experience which happened with me. Also, there's an important message for you guys, so make sure you watch this video till the last. I know for sure I'm going to have too many nostalgic moments. So basically, I was in my college when I started learning this language. So एक बार I was just sitting and I decided कि कुछ different करते हैं. It's just I was doing BCom from University of Delhi at that time, and I wanted to do something which is not very common. So I decided to learn a language. तब मैं थोड़ी confused थी कि कौन सी language pick करूँ, because बहुत सारे ऑप्शंस थे. आई डेंट वॉन्ट टू डू फ्रेंच. मुझे फ्रेंच नहीं करनी थी. ऐसा कुछ पर्सनल रीज़न नहीं है फ्रेंच के साथ. इट वॉज जस्ट आई हैव हर्ड फ्रेंच थोड़ा बहुत, बट देन आई वॉन्टेड टू लर्न अ लैंग्वेज जो कभी नहीं सुनी थी मैंने. उसके बाद आई डिसाइडेड विच लैंग्वेज आई वॉन्ट टू डू. आई स्टार्टेड डूइंग द रिसर्च. कॉलेज कब फॉर्म निकलते हैं, क्या फीस है, क्या ड्यूरेशन है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है. आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च फॉर दैट. फिर आई वेटेड कि कब रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, कब मैं एडमिशन लूँगी, कब मैं जर्मन सीखूँगी. सो आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड. फिर आई गेव द फीस एंड एवरीथिंग. सो आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज. आई वॉज too excited, like first day of German not college. I was too excited. I was just कि यार मज़ा आएगा, आज मज़ा आएगा. तो मुझे अभी भी याद है, मैंने उस दिन ग्रीटिंग्स सीखी थी, जर्मन ग्रीटिंग्स, जिसकी मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है. आई लर्न दैट. आई वॉज सो फ्रिकिंग एक्साइटेड थ्रू आउट द क्लास, बिकॉज आवर टीचर मेड अस स्पीक एज वेल. कि जैसे जैसे बोला, फॉर एग्जाम्पल वी लर्न हाउ टू से हाउ आर यू, वी गेट्स, एंड देन रिपीट भी करो. आई जस्ट फेल्ट अ लिटिल स्पेशल for some reason, because I am going to learn a language जो ज़्यादा लोगों को आती नहीं है. It was very special for me. I don't know कि सबके साथ होता है, or was it just me who felt it? And the most struggling part, I used to take my BCom classes. I used to do theatre, so I had to do the theatre practice as well. I used to teach as well. मैं पढ़ाती भी थी. And then I opted for learning German as well. And ये सारी चीज़ें एक साथ होती थी, तो sometimes it used to get a little hodgepodge, but then हो जाता था सॉल्व. सो मे बी दिस वीडियो बिकम्स अ लिटिल मोटिवेशन फॉर दोज हु थिंक कि हम कोई नई चीज़ तो कर नहीं सकते बिकॉज टाइम नहीं हमारे पास. इट्स जस्ट यू शुड टेक आउट टाइम फॉर समथिंग इफ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग. एंड पता है, पर्सनली आई बिलीव लर्निंग शुड नेवर स्टॉप. Like even if you're done with your undergraduation, you're done with your post graduation, you're doing a job, फिर भी हम कर सकते हैं ना कुछ तो नया. लाइक दिस इज, मतलब ये मेरी पर्सनल एडवाइस है. दिस इज समथिंग विच आई फील ऑल द टाइम. इनफैक्ट जब मैंने जर्मन सीखी थी तब मुझे अपने बीकॉम के एग्जाम्स और जर्मन के एग्जाम्स एक साथ देने पड़े थे. दैट वाज हॉरिबल. लाइक सिर्फ एक हफ्ते का गैप था मेरे ड्यू के एग्जाम्स में एंड देन मेरे जर्मन के एग्जाम से. Then I gave it, and मैं ब्रैग नहीं कर रही, but I really scored well in both the exams because मुझे अच्छा लगता था पढ़ना. मैं चाहती थी वो चीज़ करना, because I am telling you out of my experience. मैंने कभी ये नहीं सोचा था. I used to remain very busy, but then अच्छा लगता था. I hope you like my journey of how I started learning the language. Okay, cheers.